Okay, welcome you all. Now this is chapter number 4, which is we are now going for shear stresses in beams. Now we know that whenever we have a beam or any kind of beam simply supported or any other beam which is having a certain transverse loading, so how the bending stress varies across the cross section that we have seen, and in this particular chapter we are going to look for the shear stress, how it is going to vary across the cross section. So as you know, whatever the shear stress is nothing but what? So that is basically we will understand what is the average shear stress and how we can find out shear stress layer by layer, how it will vary. Okay, so let us now understand this particular beam section. As you can see, I have drawn a rectangular cross section beam, which is a rectangular cross section beam, which is resting on two simply supports. So these are the two simply supports which are given here, and on these two simply supports we have a beam which is having rectangular cross section. The beam carries a UDL, so this is a uniformly distributed load over the beam, and we have cross section which is highlighted. This is the cross section of the beam. So on this cross section, we know that we can draw the SFD BMD of this kind of beam, and we know the maximum shear stress in the beam. Let's say at any particular location जहाँ पे भी shear force का value maximum है, वो SFD में हमें पता चलता है, right? So that shear force का value maximum होगा, वो particular point पे shear stress variation we need to understand. So whatever we can calculate the shear stress is nothing but that tangential force upon area, but that is nothing but called as average shear stress. So what is average shear? It's not force, it's average shear stress. So what is average shear stress? It is the shear force. Let's say if S is the value of shear force at this cross section, okay, then that upon the cross section it will give me the average value of shear stress. Okay, but if at all the cross section is there, and if that cross section, if the neutral axis is passing through that cross section, then how shear force is going to or how shear stress is going to vary across the cross section is given by certain formula. Here we do not have that formula derivation in our syllabus, so we'll understand that direct formula and we'll try to implement it. As for example, for auxiliary formula, we were having the derivation as well as that, so we have derived it. So here let us understand, suppose if we have a rectangular cross section, जो भी cross section अभी draw किया हमने, so this is my rectangular cross section, right? And if my neutral axis is like this, so we know that this will be the top layer and this will be the bottom layer, right? Will be called as bottom layer and this will be called as top layer. So on top and bottom layer, how the shear stress variation is there? The shear stress at any particular layer is given by some formula. It is given by some formula. What is that formula? We'll understand. The formula is S A y bar upon I into B. Now this formula is S A y bar upon I into B. What are these terms which are involved in this formula? We'll try to understand one by one. So what is tau here? So this tau is nothing but the shear stress at a given layer, right? A is the area of cross section. Okay, now I is area moment of inertia of cross section about neutral axis. This you already know. V is the width of the layer, at which tau is being calculated. जहाँ पे तुम tau calculate कर रहे हो उसका width क्या है layer का, and y bar, now this is important, is the location of centroid of area above or below the given layer from neutral axis. Now what do you mean by this? This is very important to know how we should get this y bar value. So now as per
the other terms are concerned, these are very quite understandable because tau we already know what is the shear stress value. Let us take, suppose in this particular cross section, I want to calculate shear stress at this layer. This is any between कोई भी एक नॉर्मल लेयर है, लेट्स से AB लेयर के लिए मैं shear stress फाइंड कर रहा हूँ AB. Okay, so when I'm calculating shear stress for layer AB, okay, so what I need to do here is I need to locate that layer. A is the area of cross section. Area of cross section I can find out because total area of cross section I can get. The I is the moment of inertia. This also I can calculate. B is the width of layer. Now here the width of layer, अगर ये इसका depth D है and breadth अगर B है, तो इसका भी ये layer का width भी B है, right? So this B can also be calculated. Now how to calculate Y? What is Y? It is a location of centroid of area above or below the given layer. मतलब ये लेयर के ऊपर का एरिया, लेट अस टेक, अभी ये सिंपल है तो ये एरिया, ये जो सेक्शन किया मैंने एरिया, इसका सेंट्रॉइड लोकेट करो, इसका सेंट्रॉइड, ये एरिया का जो भी डायमेंशंस होगा उसका सेंट्रॉइड समवेयर यहाँ पे आएगा. लेट मी टेक सम अनदर कलर. हाँ, इसका सेंट्रॉइड समवेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है. दिस सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड का लोकेशन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज नथिंग बट y bar. So what is y bar? Whatever the layer you are calculating the shear stress on, that layer, after that layer you have to take area below or above. You can take this area also, you can take the remaining area and you can locate the centroid of that remaining area, and that will also give me y. You will get the same value of y bar. You get the same value of y bar. That doesn't matter. Okay, so you take any smaller area and locate the y bar, centroid of that area. That area, this centroid G is the centroid of this hatched area. It is not the center of cross section. The centroid of the cross section is this. This is which is on through which the neutral axis passes. Right, so you have to take this area and then area ka centroid and that centroid ka distance from the neutral axis. This is your y bar. Okay, and then only you will get the stress value. Now in this way, if you talk about bottom or the top layer, if I consider this particular layer as my, and if I want to calculate shear stress at this layer, so at this layer you will observe that कि इसके ऊपर कोई area ही नहीं है. That means मेरे ये formula में what is y bar, उसके ऊपर का या नीचे का एरिया का ये लेना पड़ेगा, राइट. सो देयरफॉर यहाँ पे कोई एरिया ऊपर बचता ही नहीं है. देयरफॉर द शियर स्ट्रेस इज सिंपली जीरो एट दिस लेयर एज वेल एज इट इज आल्सो जीरो एट द बॉटम मोस्ट लेयर. सो वेयर द शियर फोर्स इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, so the shear stress is going to be maximum at a neutral axis, on the neutral axis. So the variation of shear stress will be, sorry, the variation of shear stress will be like this. It will be a parabolic variation. Okay, where it will have zero values at the top and bottom layer, and it will have maximum shear stress value at neutral axis, and it will have zero values at the top and bottom layer, and this variation is parabolic. Okay, are you understanding it? How the shear stress varies across the section, and whatever we have calculated is the average shear stress. Average मतलब क्या? अभी हम लोग जो shear stress का value find करते हैं, अगर ये variation मैंने ignore किया, and if I assume that the material is having पूरा, मतलब ये value यहाँ पे maximum है, but मैंने average value अगर draw किया, तो हम लोग जो assume करते हैं, this is average shear stress. ये value जो है, ये value ये है tau average. Always your maximum shear stress across the cross section will be greater than average shear stress. This will be true for any of the cross section. This will be true for any of the cross section. Okay. Sir, एक doubt है. Yes. Sir, आपने जो formula इसमें लिखा है, जैसे उसके अंदर अगर हम y bar की value depends करती है कि वो center of मतलब center से कितना different है उसकी y bar जो हम वैल्यू लिख रहे हैं, दैट इज कि लेयर का डिस्टेंस कितना है सेंट्रोइड से. लेयर का डिस्टेंस नहीं सर. y जो आपने लिखा है y बार का ऊपर जो b वाली जो टर्म लिखी है, a टू b में जो डिस्टेंस लिखा है ना सर आपने y बार, दैट इज ओनली ना जो हम y बार फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं. देखो y बार मैंने लिखा क्या है? लोकेशन ऑफ सेंट्रोइड ऑफ एरिया अबव और बिलो द गिवन लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस. हाँ, सो व्हाट इज y बार? जो येलो सेक्शन हैच किया है उसका सेंट्रोइड, उसका डिस्टेंस, सेंट्रोइड का डिस्टेंस, नॉट लेयर AB. ओके, नॉट लेयर AB.
ओके Yes. तो टॉप लेयर के उसका सेंट्रॉइड टॉप लेयर पे उसके ऊपर एरिया ही नहीं है, तो ना उसका सेंट्रॉइड है ना उसका डिस्टेंस आएगा न्यूट्रल एक्सिस से, देयरफॉर वो जीरो है. ओके Okay, sir. इट इज अनलाइक बेंडिंग स्ट्रेस. बेंडिंग स्ट्रेस में क्या था, बेंडिंग स्ट्रेस में उल्टा था. इन बेंडिंग स्ट्रेस इफ आई ड्रॉ द बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज shear stress distribution. In bending stress we were having minimum at the centroid at the neutral axis and the maximum at the ends, but यहाँ पे minimum at the ends, the top and bottom layer, and the maximum at the bottom midpoint. Okay, सर एक और बार ग्राफ बता सकते हो? yeah, I am going to draw. ये just एक introduction है. मैं अभी एक अलग अलग क्रॉस सेक्शंस लेके ड्रॉ करूंगा. It will be repeated. Don't worry. ये ग्राफ क्यों नहीं बनाया मैंने, यहाँ पे जीरो, इधर मैक्सिमम, इधर जीरो, तो एक कर्व बनाया which is a parabolic curve. Okay. Okay, so now let us understand the next part. So we have understood this formula which we are going to use after in this particular chapter. Okay, this is important. Now, so let us go for the next step. Let us understand shear stress distribution for standard cross sections. Standard cross sections, okay. So let us, very first one is rectangular cross section. Rectangular cross section. So now rectangular cross section agar hoga, so how the shear stress distribution will be there. So let us understand. Let us take some rectangular cross section. Like this. Okay, this rectangular cross section has got depth D and breadth B. तो ये अगर rectangular cross section है तो उसका centroid somewhere यहाँ पे आएगा, and जो centroid में से axis जाएगा, that will be my neutral axis, right? This is my neutral axis. So ये हमारा centroid है and उसमें से जाने वाला neutral axis. So this will be my top layer. This will be my bottom layer. Okay. हम अभी मुझे इतना तो पता है कि shear stress distribution में हमने इतना पढ़ा, टॉप एंड बॉटम लेयर पे shear stress का जो वैल्यू है वो कितना होता है. तो टॉप एंड बॉटम लेयर पे shear stress का वैल्यू जीरो होता है, मतलब यहाँ पे भी वैल्यू जीरो आएगा, इधर वैल्यू जीरो आएगा, और यहाँ पे कहीं पे तो मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए. हाउ मच इज दैट मैक्सिमम वैल्यू, लेट अस कैलकुलेट. तो अभी मुझे कौन से लेयर पे shear stress फाइंड करना पड़ेगा. I know that it is going to be maximum at the top and it is going to be maximum at the central layer and it is going to be zero at the extreme layers. So therefore let us consider AB as my layer. What I am considering, AB as my layer where I am going to calculate shear stress, and I know that it is going to be maximum at that point only. So my tau maximum is going to be tau on layer AB. Now AB अगर layer लिया तो उसके ऊपर या उसके नीचे का area hatch कर लेते हैं. तो ये this is my area which I have hatched. Okay. Now let us find out the terms which we will be using in my formula. So let us write down the formula first. What was my formula? So I know that shear stress at any layer AB will be given by S A y bar upon inertia about neutral axis into B. This is what we know. S is the shear force. Let us assume that S is the shear force only. So we will not change S. As per the dimension यहाँ पे जो cross section मैंने लिया उसके हिसाब से area and inertia is going to change. So let us find out inertia. Let us find out the area and inertia. So what is area? So area of the cross section, entire cross section is simply B into D. So it is simply B into D. Okay. एक मिनट हाँ. Hello. Okay. So area we know. Now what is inertia about neutral axis? So inertia about neutral axis we already know कि अगर rectangular cross section है, so it is BD cube by 12. So we can take BD cube by 12 as my inertia. What is B? Is the width of this layer. Width of the layer is nothing but you can see here B is the width of layer. तो उसको B को B रखेंगे हम लोग. Now what is y bar? अभी देखो ये एरिया हैच किया तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे आएगा ना, जो एरिया हमने हैच किया है
सॉरी, जो एरिया हमने हैच किया है उसका सेंट्रॉइड इधर आएगा और उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस ये कितना होगा? आई नो दैट दिस इज d/2, तो ये d/2 का भी आधा होगा, दैट विल बी d/4. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज y बार. व्हाट इज y बार? जो एरिया हमने हैच किया उसका सेंट्रॉइड, आई नो दैट अगर ये टोटल d है तो ये होगा हमारा d/2 एंड उसका हाफ पे सेंट्रॉइड आएगा विच विल बी एट d/4 फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. सो देयरफॉर y बार के जगह पे मैं लिखूंगा d/4. Now I know all these values. Let us substitute here in this equation. So S is as it is. I don't know the value. Area is known to me, B into D. What is y bar is d/4. What is inertia is b d cube by 12. And what is B is simply B. तो अभी इसमें ये B और ये B कैंसिल कर देते हैं हम लोग. ये एक D, ये D और ये D क्यूब कैंसिल होके एक ही D बचा. तो अभी बचा क्या यहाँ पे? तो it is S/4 into B D और ये 12 ऊपर जाएगा, राइट? तो 4 3 जा, राइट ना? BD cube by 12. Yes. Just a minute. Is there any mistake I have done? E into D. Okay, just a minute. Sir, recording. Okay. So one mistake was there, that is area of this section you have to take, not the entire cross section. Area of section above or below the layer. So whatever the layer AB I have considered, above that there is area which is half of the cross section. That is I have taken B into D/2, which I have substituted here B into D/2. Then cancelled out everything and we got this. Now see here, what is if I want to find out the average shear stress? So the average shear stress will be the shear force upon the cross section area, right? So shear stress is S and cross section area is simply entire cross section is B into D. So if I substitute tau average over here, पर ये S into B के बदले, तो my tau maximum in rectangular cross section will be 3/2 times the average value, okay, or it can be simply 1.5 times the average value. So if you know this condition for rectangular cross section, so no need to use this entire big formula to calculate the maximum shear stress. Simply we know that whenever there is a rectangular cross section, the maximum shear stress is going to be 1.5 times the average value. So you can simply calculate average value by load upon area and then you multiply by 1.5 to get the maximum shear stress value in the brief. So if you now draw this maximum shear stress distribution, so it is going to be like this. So it is going to be like this, where this is going to be maximum and which is equal to 1.5 times the average value, and this is a bending stress shear stress distribution. So this shear stress distribution we have calculated for a rectangular section. Similarly, in the next part we can calculate this for a circular cross section. If we have a circular cross section as a beam, so let me draw a circle. We have a circular cross section. This is my neutral axis passing through that. Okay. The top layer is this. The bottom layer is this. Okay. And again, we know that the shear stress is going to be maximum at the neutral axis. So shear stress का जो value है वो यहाँ पे भी 0 आने वाला है, इधर भी 0, इधर ही खाली maximum value आने वाला है, and that is going to be tau maximum. I know that this is going to be like this. ये shear stress ऐसे आने वाला है. But how to calculate it? So let us take that the diameter of this particular circular cross section is D. Let us assume that the D is the diameter of the cross section. So if I want to use my formula for, let us take, I need to take the layer. The layer which I am going to take is AB. This is my AB layer, and this AB layer पे shear stress I want to find out. So shear stress at this AB layer will be S A y bar upon inertia into B. This is what the formula we know. So according to the formula, if I try to implement, this is the shaded area.
So how will I get the area of the layer above or below? You take anything is same. So it will be half of full area, which is pi by 4 diameter square. So it becomes pi by 8 diameter square is the area. Then what is your inertia of the entire cross section? Inertia is pi by 64 d raised to 4. This you already know. Okay, and what is the width of the layer which you are finding out? You are finding out for AB layer, and the width of that layer is diameter d, right? And what is left is y bar. So what will be the inertia y bar? Location of centroid. So if you know centroid of this half circular section, the centroid of circular section will lie somewhere here, and uska jo distance hoga, that will be my y bar, which will be 4r by 3 pi. If you remember, you must have done this in mechanics. So this should be 4r by 3 pi. तो 4r को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2r by pi 3 pi, and 2r is diameter, so it is 2d by 2r को मैंने diameter लिखा है, so therefore 2d by 3 pi. Okay, so we know all these values. Let us substitute now. What? Hello. Area is pi by 4 d square into y bar is 2d by 3 pi. by 3 pi. Inertia I is pi by 64 d raised to 4 into b is nothing but diameter. So see here kitna cancellations hoga, pi and this pi gets cancelled, d square d, and यहाँ पे cancel होके d cube एक ही d बचेगा, only one d is left. Okay, so d बचा एक, pi pi cancel, 4 2s are and 2 3 are 6, so it is s by 6, 3 into 2 is 6 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा, pi d square, और ऊपर ये जो 64 है ऊपर जाएगा ना. इसको अगर डिवाइड किया तो 2 3s are हेलो सर 32. yes, एरिया पाई बाय 8 टी स्क्वायर था ना, आपने 4 लिखा है. okay, good. So this has to be 4, then this will be 12, and अभी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 3s are 12 and 16, right? तो ये हो जाएगा 16 by 3 s by pi d square. ठीक है, this is what the average. Now let us try to get what is your average shear stress. So average shear stress is shear upon area. The area of cross section of entire cross section is pi by 4 diameter square. तो ये 4 ऊपर जाएगा, 4s by pi d square is my average value of shear stress, right? तो यहाँ पे अगर मैं 4s by बाहर निकालता हूँ तो it will be 4 into 4s by pi d square. So this is nothing but my average value. So it is 4 by 3 times average value. So this is nothing but my maximum shear stress. So in case of circular section, it is 4 by 3 times the maximum value. So this is 4/3 or 1.33 times the average value. Getting it? So how we can find out the shear stress for circular section? How it is going to be maximum for circular section? Are you understanding it? How to implement this formula? Okay. So now let us now go for okay. So let us now go for the next section. We have taken rectangular section and the circular as a cross section. Similarly, we can have any random cross section. Let's say if we have a triangular cross section, how it can be? Okay, suppose we have a triangular cross section. This is height of the triangle,
This is base of the triangle, and we know that the centroid lies over at a distance of how much? Can you tell me where the centroid lies? The centroid lies at a distance of h by 3 from this end, from the base, and 2h by 3 from the apex. Everybody knows this, right? So this is a cross section, and you have to find out the shear stress value. So how will you calculate? Now this is quite difficult to get the shear stress of this particular section. Why? I will tell you now how to calculate the shear stress distribution for this kind of triangle. So we are going to use the same formula, but here the application of that formula won't be that easy. So let us now take, this is my layer AB, where I am going to find out the shear stress, right? But if I consider this as my layer, the area which I'm going to hatch is, let's say, this one, or the trapezoid which is below. But getting a trapezoid and getting area and y bar for trapezoid becomes difficult. Therefore, we have taken, let's say, triangle above the layer. So if that triangle is known to me, and if I want to find out the area of that triangle, because what are the formula things which are required? SA y bar upon I into B. So the width itself I don't know. तो मुझे ये भी पता होना चाहिए, right now? ठीक है, this height is how much? अगर मैं इसको divide करूँ ये height को, तो this is h by 3, and the height of this my triangle is 2h by 3, right ना? तो ये जो नया triangle है उसका height है 2h by 3, but उसका base कुछ अलग होगा. तो वो base कितना होगा? That we don't know. So how we can find out the base? So let us take, अभी अगर ये perpendicular है यहाँ से, okay, तो let us take ये जो distance होगा वो हमारा होगा b by 2, और let's say ये distance जो है वो y लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक. Okay, so similar triangle method से I can write down the 2h by 3 as my smaller height for this triangle upon the total height is h, and the smaller base is y, and this base is b by 2. Here I have used similar triangle method by similar triangle method. What I have done, मैंने similar triangle method ये दो triangles के लिए use किया. ये छोटा triangle और ये बड़ा triangle. बड़े triangle का height है h, उसका base है b by 2, इसका height है 2h by 3 और base है y. I am going to get that y value. So b h और h यहाँ पे cancel हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 2 by 3 is equal to y upon, ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 बचेगा, right? Sorry, b है ना वहाँ पे, sorry, this is b. So what is 2 also gets cancelled, so y is equal to b by 3. Y is equal to b by 3. Okay, so we got y is equal to b by 3, and therefore the base of that triangle will be 2y. So what is the area of that section? The area of triangle will be half into base is 2y into height is 2h by 3. यहाँ पे 2 cancel, will get 2h by 3 into y. Y is b by 3. So this is 2 by 9 bh. 2 by 9 bh, which is the area, only the area. Now उसका जो centroid होगा ये वाले, इसका ये centroid इधर आएगा. ये centroid यहाँ ये कितने distance पे आएगा? It will be 1/3 of the height of this triangle. Height of this triangle is 2h by 3. ठीक है, तो ये y bar जो है हमारा, ये केस में वो y bar हो जाएगा 1 by 3 times 2h by 3. So that becomes 2h by 9. ठीक है, I hope you understand how I have calculated y bar, how I have calculated area as well. So area and y bar are known to me. Now what next? I want to find out the inertia about the neutral axis, inertia of neutral axis of entire cross section. So what is inertia of triangle? Anybody knows? Inertia of triangle, triangular section about axis. Sir, centroid by 3. हाँ, Divide by 3 रहता है ना, बाकी same रहता है. BD cube by 3. BH cube by 36. 3. Right ना? BH cube by 12 तो rectangle का होता है, उसका divide by 3, तो BH cube by 36. That is at the centroid of this location. ठीक है, तो we know the inertia also. And what is the width of this layer AB?
width of layer AB is 2 times y ना, देखो ना लोअर AB ये तो y है तो ये यहाँ पे भी y रहेगा, so it is 2 times y, तो 2 times y का वैल्यू है b/3, so it is 2b/3. Okay, yes. So now can I find out the shear stress value at AB layer? It will be SA y bar upon I into B. So what is S? I don't know. What is area? Area above the layer is 2BH by 9. What is y bar? Is 2H by 9. Upon inertia is BH cube by 36. Into my B is this B is nothing but not base. It is the width of this layer. That width of layer AB. So width of layer AB is 2b/3. So that I need to write down 2b/3. तो अभी देखो कैंसिलेशंस क्या क्या हो सकता है. So here 1b can be cancelled out. This 1b can be cancelled out. 2 can also be cancelled out. Okay. ये h और यहाँ पे h क्यूब गया, h ही बचा. Okay. Now ये 2 बचा है. So I will write down 2s by 9 into 9 becomes 81 into ये 36 into 3 ऊपर लिखता हूँ अभी और नीचे बचा b into h. ओके, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो दैट वुड बी 27. 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 9 था, 3 12 था और अदर अच्छा 3 9 था, 3 12 था, 3 3 था, 3 4 था, राइट ना. So how much? 4 to the 8 s by 3 bh. Correct me if I am going wrong somewhere. सही है सर. Correct है? हाँ सर. Okay, good. So we've calculated something out of this. Now can you calculate average value of shear stress? Average value of shear stress. So what will be the average value? It is shear stress upon the area of cross section. Shear force upon area. Area कितना आएगा पूरा triangle का? It is half into b into h. बराबर ना? Half into b into h. तो कितना होगा? It is 2s by bh. बराबर कि नहीं? Yes or no? If you simplify this, Yes sir. can I write it is 3/2 times the average value? 4/3 times the average value. Oh sorry, 4/3 times the average value because 2s by bh को हम लोग average लिख सकते हैं. That can give me this value. Okay, but ये हो गया इसके लिए triangular section के. Suppose if I give you a layer, if I give you a layer at a distance h/4. देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी. अगर मैंने यहाँ पे एक लेयर लिया होता h/4 डिस्टेंस पे, h/4 मतलब इधर, तो यहाँ पे कितना shear stress आता? ये डिस्टेंस है h/4, ठीक है. यहाँ पे तो ऊपर का कितना हो जाता? 3h/4. h/4. सिंपल ऐसे ही करने का. तो कैन यू गिव मी वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट shear stress at h/4 वैल्यू, h/4 लेयर? यस, कैन यू? सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है. लेट अस क्विकली डू इट or else we'll do it on the next page. Let us quickly do it on the next page. Quickly I am drawing the triangle. Okay, I am interested in finding out the shear force at this particular layer AB. अभी वो थोड़ा ऊपर लिया है मैंने, ठीक है, वापस ही बना देता हूँ. This is my base B and this is height h. The layer is somewhere here. AB layer is here, or let's say not AB. Now let's take PQ is the layer, and
लेट अस से दिस इज y, दिस इज आल्सो y। तो ये जो उसका हाइट है वो कितना है, एक मिनट है, एक मिनट, हाँ ओके करेक्ट था। सो ये जो हाइट था, तो हाइट ये h/4 लिया है मैंने, तो ये हाइट कितना हो जाएगा 3h/4, राइट। सो इफ आई टेक दिस एज क्रॉस सेक्शन, आई नीड टू हैच दिस एरिया, ठीक है। तो अभी मेरा shear stress का वैल्यू कितना आता है, let us I am going to calculate, so let me take first similar triangle। so by similar triangle method, अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ ट्रायंगल्स, तो इसके लिए ये वाला हाइट कितना है, ये वाला हाइट है 3h/4, 3h/4, और टोटल हाइट h है, उसका बेस y और नीचे वाले का बेस है b/2। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो h कैंसिल हो जाता है, 3/4 इज इक्वल टू 2y/b, 2y/b। तो व्हाट इज y इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 3/8 टाइम्स b, राइट। y इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स b ना, ठीक है। अगर y 3/8 टाइम्स b है, व्हाट इज माय एरिया, हाफ इनटू बेस इज 2y, हाइट इज 3h/4, ठीक है। तो 2 कैंसिल, so it is 3h/4 into 3/8 into b, so this becomes 9/32 hb या फिर bh, ठीक है। दिस इज माय एरिया। नाउ हाउ इट, व्हाट विल बी y बार। तो देखो अभी ये जो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा, तो इसका सेंट्रोइड आएगा इसके 1/3 डिस्टेंस पे ना, ठीक है। देखो ये होगा 1/3 ऑफ 3h/4, तो ये कैंसिल, इट विल बी h/4, 1/3 ऑफ 3h/4 इज 3 कैंसिल, h/4। बट h/4 कहाँ से, ये वाले लेवल से। हमें क्या चाहिए होता है, y बार फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे किधर है, तो आई विल शो माय न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस इधर है, 1/3 डिस्टेंस पे, सॉरी ऊपर है थोड़ा, न्यूट्रल एक्सिस 1/3 डिस्टेंस पे है ना। h/3 बड़ा होता है ना h/4 से, तो दिस इज न्यूट्रल एक्सिस का लेयर। तो हमें क्या चाहिए, न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल y बार विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। सो फॉर y बार के लिए अगर मैं देखता हूँ, ये डिस्टेंस चाहिए, दिस विल बी माय y बार। सो माय y बार विल बी न्यूट्रल एक्सिस से जो पोजीशन था उसको माइनस करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट क्लियरली। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर देके तुम्हें ट्राई करता हूँ समझाने का। देखो ये मेरा सेंट्रोइड है, अभी का जो हैच सेक्शन है, ये मेरा सेंट्रोइड है पूरे ट्रायंगल का। इसका जो लोकेशन है वो हमने फाइंड किया था 1/3 यहाँ से, ये है उसका डिस्टेंस कितना, h/4। ग्राउंड से मेजर करेंगे तो h/4 प्लस h/4 हो जाता है h/2, लेकिन मेरा ये डिस्टेंस कितना है h/3 से। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देम, इट इज h/2 minus h/3. My y bar will be h/2 minus h/3 will be giving me h/6, 6 right? समझा, ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैं अलग अलग लेयर्स पे इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज दिस फॉर्मूला विल बी फैमिलियर विथ यू, सो दैट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट इज व्हाई वी आर मोस्ट फोकसिंग ऑन द राइट पार्ट, जहाँ पे हमें कुछ चीजें करनी है। सो y bar I know. Now once you know y bar, you can simply find out the inertia. Inertia तो हमें पता ही होता है, वो सेम ही रहेगा, ph cube by 36. Okay. So what I'll get my shear stress value at PQ level? It is S A y bar upon IB. अब मैं ये सवाल करता प्रशांत मौर्य बार बार बोलता है। Okay. So S area is 9/32 BH. Y bar is h/6 upon inertia is BH cubed by 36, and what is B? B is nothing but 2I. So 2 into 3/8 B. Okay. So how, what are the things can be cancelled out? तो यहाँ पे देखो एक B, ये B के साथ कैंसिल हो गया, ये H, ये H स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, राइट। हाँ, तो अभी क्या होगा कैंसिलेशन, 6 है
ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इसको ऐसे ही लिखेंगे 9 अपॉन 9s अपॉन 32 इंटू 6 इंटू इधर क्या क्या बचा है BH इंटू 2 इंटू 3 और ये 8 इंटू 36 ऊपर जाएगा, बराबर है। तो अभी देखो क्या क्या कैंसिलेशन हो रहा है। ये 9 है तो 3 1 दा 3 3 दा 3 1 दा 3 2 दा 2 2 4 यहाँ पे 2 बचेगा, बराबर। तो अभी क्या बचा 2 इंटू S इंटू 36 अपॉन 32 इंटू BH। ओके, अभी क्या डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 4 9 दा 36 4 8 दा राइट 2 1 दा 2 4 दा। So now it is 9s by 4 BH, 9s by 4 BH, बराबर है। Okay, so this is what we get at any general layer PQ जो मैंने कैलकुलेट किया। Now tell me 9 by 4 का वैल्यू कितना होता है in decimals? कितना होगा? 2.25 2.25 9 by 4 का वैल्यू कितना 2.25। ओके, एंड जो पहले वाले स्लाइड पे हमने कैलकुलेट किया था ये वाला जो लेयर h/3 पे था वो था 8/3 ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8/3? 2.67 ना 2.67 2.37 67 अच्छा 2.67। तो सी यार हमने क्या किया न्यूट्रल एक्सिस पे फाइंड किया तो 2.67 आया और उसके नीचे उसके ऊपर वाला लेयर लिया तो कितना टाइम्स आ रहा है 2.25 टाइम्स, है ना। तो वेरिएशन कैसे हो रहा है, मैक्सिमम कहाँ पे मिला है, ऑफ कोर्स एट द न्यूट्रल लेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जस्ट टू शो इट, नथिंग एल्स, हाउ द shear stress distribution takes place. Have you understood this with different cross sections how we can get any of the layer and you can calculate the bending stress value at that layer? Now let us try to implement this in our actual problems. This is my actual problem. Now see, the problem is they determine the maximum shear stress in the web of beam. There is a beam cross section having T as the cross section. Its cross section कौन सा है? T का है. Okay, T-shaped cross section beam as shown in figure. And you have to find out the if the values are given, the P value is 40, the C value is ये तो centroid का value होगा, ठीक है। What is the thickness value they have given? It is 10 mm. What is the height? Overall height is 80 mm. And what is height H1? 70. मतलब ये भी 10 है, यहाँ पे ये 70 है, okay. And what is the shear load given as? The shear force is 10,000 Newton. So you have to take shear force value as 10,000 Newton, and you have to calculate the bending stress distribution. Okay. अभी सबसे पहले तो y bar यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमें y bar लेना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? y bar का लोकेशन दिया ही नहीं है ना. So they are asking you to draw the bending stress, the shear stress distribution for this particular cross section. Okay, so ये मैंने centroid वाला line लिया. Let me take this value also. We'll quickly understand why I am taking these layers. हाँ, तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, तो shear stress distribution, and ये फाइंड करते करते मुझे maximum value of shear stress भी मिलेगा. I know that the maximum is going to be the layer on the layer which is maximum. So देखो अभी यहाँ पे मैं कैसे layer select करता हूँ. Okay, तो see here, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y bar का लोकेशन फाइंड करते हैं एंड inertia फाइंड करते हैं. वो तो दोनों कॉमन चीजें हैं. You have to locate the centroid of T section. I am writing centroid of T cross section. उसको मैं कैपिटल y bar लिखता हूँ बिकॉज स्मॉल y bar यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं.
Yes, somebody is saying something in the chat box, but unfortunately chat box is not opening. Sir, actually, it mistyped. Sorry. Yes. That was me. Actually, I got text from a classmate regarding attendance. Just that was replying, so it got to you. I'm not sorry, I can't hear you. So I was गलती replying से to one of my चला गया। classmates. ओके। अरे रिप्लाई मत करो रे, इधर देखो। हाँ चलो, कौन था वो रिप्लाई वाला? मुझे अभी वैल्यू बताओ वाई बार। हाँ सर, वाई बार की वैल्यू यस सर। तो वाई बार की वैल्यू के लिए सबसे पहले फर्स्ट वी विल कंसीडर द लोअर द वर्टिकल ट्रायंगल। यस। For that we will consider the value, just 10 into 70 for the area. Okay. And then since we are considering for y, it will be the perpendicular distance, that is, yes sir. Which slide? Wait a minute, तो हैंग हो गया, होता रहता है ऐसे। Wait a minute. Now is it visible? No sir. Visible? अभी? Okay. हाँ। Yes sir. बोलो y बार। So y bar के लिए अगर वर्टिकल ट्रायंगल को पहले कंसिडर करें तो it would be like 10 into 70 and then the मतलब for 70 into 10 का क्यूब। इनर्शिया नहीं फाइंड करना है बेटा। हाँ सॉरी, अच्छा y bar, सॉरी। हाँ 10 into 70 into 35। Yes sir. उसका लोकेशन 35 पे आएगा ना? ऐसे हाफ 35 पे। यस हाँ, प्लस ऊपर वाले का क्या? 10 into 40। हाँ 10 into 40 लोकेशन कहाँ into पे? 70 plus 70 plus 5 75 अपॉन 10 into 70 plus 40 into 10। 10। हाँ, कितना आता है ये आंसर? 49.54। 49.54। Here now, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस कितना होगा? 49.54 बराबर है। 49.54। ओके, दैट इज माय वाई बार का लोकेशन। अभी आगे क्या करेंगे? कैन यू गिव मी द इनर्शिया वैल्यू? इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये तो लगेगा ना हमें फाइंड करने के लिए। तो इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला जो इनर्शिया है वो क्या है? 10 into 70 क्यूब बाय 12, और उसको शिफ्ट कहाँ पे करेंगे? तो 10 into 70, उसका लोकेशन था 35 पे, बट हमें चाहिए 49.54 पे। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली 49.54 माइनस 35 का स्क्वायर। ये हो गया पहले रेक्टेंगल का। दूसरे रेक्टेंगल का क्या? 40 into 10 क्यूब राइट बाय 12, वो 40 into 10 एरिया, उसका लोकेशन था 75 पे, हमें चाहिए 75 पे नहीं 49 पे। तो 49.54 को माइनस करो स्क्वायर। ये बताओ कितना आया आंसर? हाउ मच इज दिस आंसर? Yes. 6.96 into 10 raised to 5. 6.96. 6.96 10 raised to 5. 5. Okay. Now see here. Once I know this as my inertia 6.96 10 raised to 5 about neutral axis, what I need to do is inertia, अभी मुझे shear stress का वैल्यू फाइंड करना है अलग अलग लेयर पे।
तो सबसे पहले मुझे पता है कि मिनिमम कहाँ पे आने वाला है, टॉप में, टॉप लेयर पे, बॉटम लेयर पे मिनिमम 0, एंड मैक्सिमम कहाँ पे आने वाला है, तो न्यूट्रल लेयर पे, ठीक है। तो उससे पहले मुझे पता है कि देखो मेरा जो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू है टाउ का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला में क्या है, वो फॉर्मूला में एस ए वाई बार एंड अपॉन आई इंटू बी, वेयर बी इज द विड्थ ऑफ द लेयर। तो यहाँ पे अलग अलग विड्थ के लेयर्स है, अभी ये यूनिफॉर्म नहीं है क्रॉस सेक्शन। देखो अगर मैंने ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला लेयर लिया, ये वाला लेयर, ये लेयर्स को मैं नाम देता हूँ पहले, तो मैं लेयर 1 1 बोलता हूँ इसको, ओके। ये लेयर 1 1, तो लेयर 1 1 का विड्थ देखो कम है। अगर मैं ये लेयर लेता हूँ तो उसका विड्थ लेयर 2 2 लेता हूँ, उसका भी विड्थ अलग है। लेकिन लेयर अगर ये वाला लिया 3 3, तो उसका विड्थ अलग है, इस 3 3। एंड अगर टॉप मोस्ट लेयर पे जाता हूँ तो मुझे पता ही है यहाँ पे 4 4 पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, और ये 5 5 पे भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। मतलब मैं अगर इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियल लेवल पे ड्रॉ करके रखूँ तो ये ऐसे कुछ तो होगा कि यहाँ पे 0 वैल्यू है, ये मुझे पता है। बट देयर विल बी चेंज इन द शेयर स्ट्रेस एट लेयर 3 3, लेयर 2 2, लेयर 1 1, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, वैल्यूज कितने होंगे आई डोंट नो, आई विल हैव टू कैलकुलेट। अंडरस्टैंडिंग इट, मैंने यही सेक्शंस क्यों सिलेक्ट किए, तो क्योंकि वहाँ पे विड्थ चेंज हो रहा है, देयर इज अ चेंज, वेरिएशन इन द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू विड्थ चेंज इन द क्रॉस सेक्शन देयर विल बी चेंज इन द शेयर स्ट्रेस वैल्यू। तो वो 2 2 एंड 3 3 वाला लेयर अगर तुम देख रहे हो तो 2 2 मतलब वो वेब का पार्ट है, वेब पे कितना शेयर स्ट्रेस आ रहा है, एंड 3 3 अगर लिया मैंने तो इट इज फ्लांज का बॉटम लेयर। अंडरस्टैंडिंग इट, ज्योमेट्रिकली वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, राइट। वेब 2 2 इज स्टैंडिंग फॉर वेब एंड 3 3 इज फॉर the bottom layer of the flange. I hope you understand what is wave and what is flange. Okay. Yes. So now if I know, if I want to calculate all those, because 5 5 section बाकी सब sections पे मुझे already पता है, तो ये बाकी मैं खाली कौन से section में find करूँगा, 1 1 2 2 and 3 3. Let us start with 3 3 section. Let us start with 3 3 section. तो अगर मैं 3 3 section की बात करूँ और मैं individually वो draw करते जाऊँगा, so that it will be better for you to understand. Okay, sorry, थोड़ा इरेजर लेके जगह बनाता हूँ because I'll be requiring some space. ये जगह बनेगा नहीं यहाँ पे, but ठीक है, I'll be writing over there only. इधर से लिखना चालू करूँगा. Now I am solving for section 3 3. Okay, तो section 3 3 कौन सा है, तो section 3 3 अगर मैंने लिया तो सेक्शन 3 3 लेने के बाद ऊपर मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा बचेगा, मतलब नॉट क्रॉस सेक्शन एरिया, ये 3 3 है ना, ये एरिया हैच होगा बराबर। और न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है, न्यूट्रल एक्सिस इतना नीचे है, अरे अंडरस्टैंडिंग है बराबर कि नहीं। मैंने खाली न्यूट्रल एक्सिस सपोज इधर है, मैंने खाली वो लेयर बनाया है। Okay, now what I want to know about this layer, so I want to know the centroid of this layer and उसका location from the neutral axis, बराबर, उसका location from the neutral axis जिसको हम लोग y बार बोलते हैं, और उसका एरिया। अभी ये क्रॉस सेक्शन जो मैंने लिया है इसका एरिया कितना होगा, तो ये क्रॉस सेक्शन जो मैंने लिया है उसका एरिया हो जाएगा 40 × 100। ओके, इनर्शिया तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, सबके लिए सेम ही होता है वो। वाई बार का जो वैल्यू है जो चेंज होगा हर बार, वो वाई बार कितना होगा ये केस के लिए। अभी देखो ये अगर 10 है, इफ दिस इज 10 तो ये 5 है, और उसका वाई बार हमें ऑलरेडी पता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है वो 75, सो दिस इज गोइंग टू बी 75। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग। मैंने क्या किया, वो 3 3 सेक्शन लिया। हम लोग शेयर स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, जो सेक्शन लेते हैं उसको ऊपर का एरिया लेते हैं, ऊपर का एरिया मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया और उसका मैं वाई बार और उसका ई बार मिला। तो कैन आई कैलकुलेट शेयर स्ट्रेस एट 3 3 सेक्शन। Shear stress at 3 3 section is, my formula is SA y bar upon I into B, right? What is B for this layer? ये लेयर का width B कितना है, तो ये लेयर का width B 40 है, वो खुद ही दिया हुआ है। So now I can substitute S का वैल्यू है, yes सर y बार न्यूट्रल एक्सिस से रहता है ना, तो न्यूट्रल एक्सिस से ही लिया ना भाई, न्यूट्रल एक्सिस से y बार वो कुछ अलग सर ग्राउंड से लिया है पूरा। 75 माइनस 49.54, हाँ वो करना मैं भूल गया, 49.5 और कितना होगा 25.5 ये वाला लेना चाहिए था यहाँ से, हाँ कितना 20 5.46
0.46. हाँ तो S एरिया इज 400, y bar is 25.46, हाँ सर 46 upon I inertia is 6.96 10 raised to 5 into B is 40. अंडरस्टूड? कर सकते हैं सॉल्व इसके लिए? कितना आएगा आंसर बताओ? यस, कितना आएगा आंसर? थ्री पॉइंट सिक्स फाइव 3.65. ओके, इसका आंसर आया 3.65 MPa, that is Newton per millimeter square. Now see here, when I am talking about section 22, तो section 22 भी वही लेयर पे, बराबर ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 22 बोला तो खाली तुम इतना ही एरिया लो, ऐसा नहीं होता. सेक्शन 22 मतलब वो सेक्शन है, वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन 22 अगर मैंने लिया तो उसके ऊपर भी ऐसे ही बचेगा. सी हियर, दिस इज माय सेक्शन 22, ये 22 के पॉइंट्स है, बट इसके ऊपर का जो एरिया है वो तो यही है ना, पूरा फ्लांज ही है. खाली मेरा विड्थ कितना है, तो विड्थ मेरा इतना है. बी का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा 20 कितना 10 ना, बी का वैल्यू कितना 10 mm. ये बी कितना है 22 के लिए 10 mm है ना. बाकी सब कुछ सेम ही है, वो एरिया उधर ही रहेगा, उसका न्यूट्रल एक्सिस वहीं पे रहेगा, तो वो वाई बार एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिमेनिंग सेम. तो सेक्शन 33 एंड 22 के लिए फाइंड करने के लिए कोई अलग नहीं करना है, ये सेम फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग. यहाँ पे चेंज क्या आएगा, यही सेम 10 into 10 raised to 3 into 400 is also same into 25.46 is also same. There is only change in the B. ये 40 के बदले में क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा 10. अंडरस्टैंडिंग इट? तो सेम लेयर पे अगर मुझे अलग अलग विड्थ के लिए फाइंड करना है तो मुझे कुछ अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. मुझे एरिया वाई बार सब कुछ सेम रहेगा, ओनली दिस इज गोइंग टू बी चेंज. हाउ मच विल बी दिस? इसके 4 टाइम्स आएगा, वो कितना आएगा 14.63 MPa. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इम्पोर्टेंट, जो जिसके लिए हमें थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, विच इज माय सेक्शन 11. अभी सेक्शन 11 अगर मैंने लिया तो देखो, मेरा सेक्शन 11 लेने के बाद मेरे पास बचता ये टाइप का शेप है, बराबर कि नहीं? ये हमारा सेक्शन 11 है ना, और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन 11 में से ही पास होता है. यही हमारा सेक्शन 11 है और वही हमारा न्यूट्रल एक्सिस भी है, ठीक है. हाँ, तो ये हमारा हैचिंग पार्ट है. तो अभी इसके लिए मुझे सब कुछ अलग करना पड़ेगा, बिकॉज ये हैच पार्ट अलग है टी शेप में, तो इसका वाई बार भी हमें पता नहीं है, नथिंग इज नोन टू मी. सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आई नो इज दिस डिस्टेंस इज 10, दिस इज 40. ये कितना होगा, ये कितना होगा, कैन यू टेल? 11.46. देखो 49.54 है ना, उसको 80 में से माइनस करेंगे तो कितना होता है 21.46. कितना 20.46 20 20 कैसे रे? सर 25.46 माइनस 5 किया ना सर, 31 पॉइंट ना, 20.46 है. हाँ, तो सर 31 80 में में से से 10 करेंगे गया तो तो 30 आएगा. 21.46. हाँ, ये बराबर है, बराबर ना. सर 20 आएगा 20.46. सर 20 आएगा सर 20.46. अच्छा हाँ, वो 1 नहीं है ना, बराबर. हाँ 20.46. ओके ठीक है, अभी समझा सबको? ये सबको समझ रहा. मैंने क्या किया, सेक्शन 11 के ऊपर का जितना भी एरिया था वो जो भी शेप में हो, मुझे जो शेप मिला वो लिया मैंने. ओके, समझा ना? अभी वो शेप मैंने अगर ले लिया, एक मिनट, हाँ, वो शेप अगर मैंने ले लिया है तो वो शेप में मैं क्या करूंगा, अभी आई वांट टू फाइंड आउट दी लेयर, ये लेयर पे इनर्शिया. तो उसके लिए मुझे क्या क्या लगता है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया और उसका वाई बार, बिकॉज वो वाई बार का डिस्टेंस मुझे यहाँ से मेजर कर रहा है ना, तो मैं सबसे पहले उसका वाई बार फाइंड करता हूँ और फिर एरिया फाइंड करता हूँ. ठीक है, तो वाई बार कितना होगा, तो वाई बार इसके लिए भी मुझे अभी ये छोटा रेक्टेंगल और ये जैसा मैं प्रोसीजर बड़े टी के लिए किया था वैसे अभी ये छोटे टी के लिए करना पड़ेगा.
तो ये छोटा वाला एरिया कितना रहेगा? इट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 20.46 बराबर ना, इनटू उसका वाई बार कहाँ पे आएगा? 20.46 का हाफ आएगा 10.23 बराबर, प्लस दूसरा वाला एरिया कितना है? 40 इंटू 10, ठीक है, इंटू उसका वाई बार कहाँ पे आएगा? 5 पे, तो ये 20.46 प्लस 5 25.46. 25.46. Those who have very good practice on this calculation of inertia and y bar, they will never go wrong in this kind of numeric question. Okay, upon नीचे 10 into 20.46 plus 40 into 10. Understood? कितना आएगा ये y bar बताओ? 20.30. 20.30. 30. 20.3. थोड़ा जोर से. एंड व्हाट विल बी माय एरिया? एरिया मतलब ये डिनोमिनेटर है, देखो वही तो एरिया है ना उसका. कितना? 10 into 20.46 plus 400. तो 404.6. 604.6. 604.6. 604.6 mm square. What this? तो तुम्हें y bar मिला, तुम्हें एरिया मिला, ठीक है, और तुम्हें width of section 11 कितना पता है? width is 10 mm. वो तो 10 ही है. ये सेक्शन का width कितना है? 10 mm बराबर. So therefore now can you calculate the shear stress at location 11? Formula is S A y bar upon I into B. ठीक है, तो अभी मैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए इधर लिखता हूँ. S का वैल्यू 10⁻3. अच्छा 10 into 10⁻3, तो डायरेक्टली 10⁻4 लिखता हूँ. ओके, एरिया इज 604.6, y bar is 20.30, on inertia is 6.96 10⁻5, and into B is 10. So calculate and give me the answer in MPa. 17.63. कितना? 17.63 MPa. Understood? So now can you plot it? तो देखो इधर वैल्यू 0 था, यहाँ पे ये लेयर पे तुम्हें दो वैल्यूज मिला है. देखो एक 33 पे और एक 22 पे. 33 पे वैल्यू कितना था? 14.63 बराबर ना. उसके बाद 3.65. तो मैं अभी यहाँ पे दो वैल्यूज प्लॉट करता हूँ. एक है 3.65, एक है 14.63, और यहाँ पे ये 1 लेयर पे 17.63 और इधर 0. And if I am going to plot this, so it will be parabolic curve from here to here. Then there is linear variation because there are two layers, two widths, दो widths के दो layers थे यहाँ पे, and then there will be again parabolic variation between this to this, and then there will be again parabolic variation. Are you understanding it? How this is drawn? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So is it simple than bending, or it is quite difficult than bending? Yes. Same है sir, वैसे ही. Those who have still difficulty in calculating inertia and this one y bars, that is centroids, for them it is a big hurdle, because I was saying it again and again कि you have to master this skill, because every time everywhere you will be requiring y bar area, inertia anywhere, and that is not having much marks. हर बार वो एक ही मार्क का होगा, but वो अगर wrong हुआ तो आगे का सब wrong. Understanding it? So did you understand this particular part? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. shall we stop here? Yes, sir.